अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय शोर। चलिए जी, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडीज़ को। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने होम पर। सही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके जो है ना 10 लेक्चर्स ही यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके 10 लेक्चर्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके फिजिकल केमिस्ट्री में 20 हो गए हैं। ठीक है, 10 से 20 वाले डबल हो गए इसके भी। और इसके अलावा इसके 3 हो गए। इसका 3rd लेक्चर हमने इंग्लिश का कर लिया ना, सुबह ही कर लिया था हमने। ठीक है, उसके अलावा इसके भी 9 हो गए हैं, मतलब इसके भी डबल हो गए और इसके भी डबल हो गए। ठीक है, एक एक करके सबके लेक्चर करते रहेंगे। नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा है BIF101 इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो हम चलते हैं यहाँ पर। हमारे इसके 8 टॉपिक्स में आईडीज हमने कर लिए थे। ठीक है, तो चल लेते हैं आगे। शायद 8 के थे या 7 के थे, देखते हैं। तो देख लेते हैं। हमने इसके 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, वहाँ जाकर भी देख लेते हैं। मैंने डन लिखा होगा कि नहीं, सॉरी मैंने डन नहीं लिखा क्योंकि उस वक्त ये क्लोज था, अभी भी क्लोज है ये। ठीक है, एमडी भी क्लोज है ना, इसलिए डन नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर। तो अभी भी क्लोज है। तो फिर सबसे पहले हम लोगों का अगला टॉपिक है ये तो हमारा 8 टॉपिक है। इसको तो मैंने कंप्लीट कर लिया। हमने करना है इससे अगला टॉपिक। ठीक है, हमारा टॉपिक है 9 अचीवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको टेक कर लेते हैं, इसका क्विज टेक कर लेते हैं जनाब। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ऑसवर्ल्ड एवरी एंड हिज कलीग्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट DNA इज द हेरिडिटरी मटेरियल। म्यूटेशन occur at any time. None of these all genes are located at the same location. यहाँ पर कर देते हैं none of these, ये इनकरेक्ट है। रीटेक कर लेते हैं, कोई मसला की बात नहीं है। जितना इनकरेक्ट होंगे उतना हमारा फ़ायदा, क्योंकि हम वो सर्च कर लेंगे अगले क्विज़ के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए। ठीक है, अपने फर्स्ट क्विज़ के सही है ना। हु सिंथेसाइज्ड यूरिया इन 1828? मेंडल, फ्रेडरिक वूलर, एंसेल्म पाइन, एडवर्ड बुचर। मेरे ख्याल में एंसेल्म पाइन। आई डोंट नो द आंसर, ये भी इनकरेक्ट। अब देखते हैं आगे। ठीक है, हु सिंथेसाइज्ड यूरिया इन 1928? चलो, शायद एडवर्ड बुचर। इनकरेक्ट। अल्लाह करे अब फिर से रिपीट हो जाए। सही है। स्टेटमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कंक्लूडेड दैट हाउ द मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट वन अनदर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ। या ट्रू, ये करेक्ट हो गया। थैंक्स लॉर्ड। चलें जी, इसको क्रॉस कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया वीडियो में हम वीडियो अच्छे सुन लेते हैं। The important experiments in the field of biochemistry and genetics laid down the foundation of molecular biology. The most important experiments among those were the description of DNA's structure by Watson and Crick, and in the field of genetics, the main experiments which contributed towards the development of molecular biology were the experiments of Avery, who proved that DNA is the genetic material. So these experiments, they actually laid down the foundation of molecular biology. Now the molecular biology was born, and the new discoveries were being made in the field of molecular biology. So the question was how DNA is expressed, how it transfers its information in the form of proteins. So this problem was solved in 1957 by Francis Crick, who laid out the central dogma of molecular biology. And this central dogma foretold the relationship between DNA, RNA and protein. It described
how DNA transfers its information to RNA, and then this information is translated in the form of proteins. So here in this illustration you can see the DNA molecule. The information in the DNA molecule is copied to the mRNA molecule, and then this information is translated from mRNA to the proteins. So the information which is present in DNA molecule is exactly copied in the form of protein molecule. So in this way, this information is carried from the nucleus, from the DNA molecule, and it is transmitted to the site of protein synthesis, where this information is translated in the form of protein synthesis. Next important discovery was made in 1958 by Matthew Michelson and Franklin Stahl. They proved that the replication in a DNA molecule was semi-conservative, because this was another important problem, that how a DNA molecule is replicated into 2 molecules and then into 4 molecules. So in this picture you can clearly see this is a DNA molecule, and when it replicates, one strand goes to this molecule and the other strand goes to this molecule. So both the blue strands here and here, they are parental strands. They have come from the parental molecule of DNA, and the pink strands, they are synthesized new. So this is called semi-conservative, that is, one strand is conserved. In the next replication, again from this molecule, one strand is conserved and the other strand is newly synthesized. So this is called semi-conservative replication, and this was described by Matthew Michelson and Franklin Stahl. Next important contribution was made by Marshall Nirenberg and Gobind Khorana. They worked independently and they cracked the code in early 1960s. They found that 3 bases constitute a code word called a codon that stands for one amino acid. It means the 3 words on the strand of DNA, they code for one amino acid. So in this way, all the information for the synthesis of proteins containing 20 different types of amino acids is present in the DNA molecule in the form of codons. Next, in 1970s, the important achievement was gene cloning. Scientists have learned to isolate genes from some organisms, place them in new organisms, and reproduce them by a set of techniques which is called gene cloning. So in this way, the genes, the characteristics from one organisms can be transferred to the other organism. It was an important achievement in the field of molecular biology, and it gave rise to the genetic engineering. So with the help of this gene cloning and genetic engineering, many genetically modified organisms were created, and these organisms included plants and animals, and many of these genetically modified organisms are in practice, they are in the field, and still many new are being created.
So the new organisms, genetically modified organisms, they have desirable characteristics. As you desire, you can produce those characters in the GMOs. The important contribution, perhaps the most important contribution in the field of molecular biology, is the Human Genome Project. The Human Genome Project was launched in USA in 1990 and was completed in 2003. The main goal of Human Genome Project was to sequence the whole genome of the human and to identify and to map all the genes present in the human genome. There are approximately 35,000 genes present in the complete human genome. Although this Human Genome Project, it was successful to the extent that it sequenced all the genome of human beings and it mapped all the genes present in this genome, but many of the genes are still undescribed. That is, the functions of those genes is still to be described. So friends, thanks Lord, हमारे लेक्चर कंप्लीट हो गया है. ठीक है, हम चलते हैं आगे हमारी रीडिंग की तरफ. हमारी रीडिंग में है जनाब अचीवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन 1957. फ्रांसिस क्रिक laid out the central dogma of molecular biology which foretold the relationship between DNA, RNA and proteins. In 1958, Matthew Michelson and Franklin Stahl proved that DNA replication was semi-conservative. Marshall Nirenberg and Gobind Khurana, working independently, cracked the code in the early 1960s. The Human Genome Project was launched in 1990 and completed in 2003. ठीक है, आप चलते हैं अपने बोनस पॉइंट की तरफ. जनाब हमारे पास आ गया है बोनस पॉइंट, तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं. ठीक है. Achievements of molecular biology in 1957, Francis Crick laid out the central dogma of molecular biology which foretold the relationship between DNA, RNA and proteins. ठीक है, ये DNA है. ठीक है, इसकी रेप्लिकेशन होती है. ठीक है, एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड बनता है, उसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है. यहाँ से ये ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर, RNA पर. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होती है और RNA बनता है. ठीक है, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन होती है RNA की, तो फिर प्रोटीन बन जाती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर अचीवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी in 1958, Matthew Michelson and Franklin Stahl proved that DNA replication was semi-conservative. ठीक है, ये एक था. इसके एक्सटेंड यहाँ पर एक्सटेंड यहाँ पर अलग हो गया. उसके बाद वो रेप्लिकेट हो गया. रेप्लिकेट होने के बाद में फिर उसने आगे से भी अपनी जो है ना जनरेशन बढ़ाना शुरू कर दी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया अचीवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मार्शल नायरनबर्ग एंड गोबिंद खुराना, working independently, cracked the code in early 1960s. ठीक है, they found that three bases constitute a code word called a codon that stands for one amino acid. ठीक है, इसके बाद gene cloning. Since 1970s, scientists have learned to isolate genes, place them in new organisms and reproduce them by a set of techniques collectively known as gene cloning. ठीक है, उसके बाद for genetically modified organisms, the technique of gene cloning led to the creation of a large number of genetically modified organisms with desirable characteristics. ठीक है, Human Genome Project. The Human Genome Project was launched in 1990 and completed in 2003. Okay, understood. So यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, टेक कर लेते हैं. Start books. Who confirmed that DNA is the hereditary material? Alfred Hershey
nucleic acids. Nucleic acids are one of the most important biomolecules which are present in the living organisms, and they act as repositories for the genetic information in the living organisms. Although nucleic acids and their components have a number of functions to perform in the cell, but the main function is the storage and transmission of genetic information in the living organisms, and this storage and transmission of genetic information is one of the fundamentals of to sustain life. Like proteins and polysaccharides, nucleic acids are also polymeric compounds. As you know, proteins are the polymers of amino acids. Amino acids are the building blocks of proteins. Similarly, polysaccharides such as starch and cellulose, they are made up of repeating units of glucose. So glucose is the building block of polysaccharides like starch and cellulose. Similarly, nucleotides are the repeating units in a nucleic acid. So nucleic acids are the polymeric compounds which are made up of nucleotides. Nucleic acids are mainly of two types. These are ribonucleic acids and deoxyribonucleic acids. Ribonucleic acid is abbreviated as RNA, while deoxyribonucleic acid is generally abbreviated as DNA. There are three types of RNAs. These are tRNA, transfer RNA, ribosomal RNA, rRNA, and messenger RNA, mRNA. They have a number of functions to perform in the cell, mainly during the protein synthesis. While deoxyribonucleic acids, DNA, they are only of one type. There are no other types of DNA, and they are mainly present in the nucleus in addition to chloroplast and mitochondria. As you know, the protein sequence, the sequence of amino acids in a protein molecule, that depends on the nucleotide sequence in the DNA molecule. So DNA molecule describes the amino acid sequence of a protein. Similarly, the nucleotide sequence of a mRNA, these are dictated by the nucleotide sequence of DNA. So a segment of DNA which is responsible for the synthesis or production of a functional product, either mRNA or a protein, this segment of DNA is called a gene. So as you know, there are thousands of genes in an organism. So obviously the DNA molecule contains thousands of genes, so it will be a long molecule. So friends, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है. ये वाले सर की तो बहुत अच्छी समझ आती है इससे. आई होप आप लोग मुझसे एग्री करते हैं. जो एग्री करता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो एग्री करता है. ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने काम की तरफ. उसकी रीडिंग कर लेते हैं. न्यूक्लियोटाइड एसिड. Nucleic acids are important group of biomolecules which are responsible for storage and transmission of hereditary information like proteins and polysaccharides. Nucleic acids are also a polymeric compounds, the repeating units, and the nucleic acids are nucleotides. There are two main types of nucleic acid, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. ठीक है, पेंटोज शुगर deoxyribose and आरएनए में राइबोस. ठीक है. बेस कंपोजिशन एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमाइन, और इसकी आरएनए जो थी एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल. ठीक है. नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, डबल स्ट्रैंड्स फॉर्म्स अ डबल हेलिक्स, और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है. ठीक हो गया. उसके बाद चलते हैं अभी बोनस पॉइंट की तरफ. बोनस पॉइंट, एज यू ऑल नो, आवर बोनस पॉइंट इज पीपीटीज. इसको कर लेते हैं ओपन, और ये हो गई ओपन. न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर आ गया है. न्यूक्लिक एसिड आर इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ
Biomolecules which are responsible for storage and transmission of hereditary information like proteins and polysaccharide nucleic acids are also polymeric compounds. The repeating units in the nucleic acid are nucleotides. न्यूक्लिक एसिड्स में क्या क्या होता है? क्या ये इसकी डिवीजन है? राइबोन्यूक्लिक एसिड्स RNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स DNA. ठीक हो गया, और ये हो गया डन टॉपिक. ये हमारा एक और टॉपिक डन हो गया. ये इस पर डन नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड बंद है फिलहाल. ठीक है, अब हमारे पास पोस्ट असेसमेंट आ जाती है. एग्जांपल ऑफ पॉलीमरिक कंपाउंड्स आर पॉलीसैकेराइड न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन पॉलीसैकेराइड न्यूक्लिक एसिड्स. प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन पॉलीसैकेराइड. अच्छा, ये सब के सब पॉलीमरिक कंपाउंड्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम चल लेते हैं. तो द मेन गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज, और आई नो दैट ये गलत ही वो हो जाएगा. ठीक है, हम टिक पर क्लिक करेंगे तो वो तो करेक्ट हो. ठीक है, उसके बाद हम इसको कर देते हैं. आई मीन इस पर क्लिक करेंगे ना तो अपने पता चलेगा क्या. ये देखा ना, एक करेक्ट हो गया, एक इनकरेक्ट. ठीक है, एक और चांस ले लेते हैं इसका. ठीक है, तो हम चलते हैं. इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू विच कार्बन ऑफ डैश पेंटोज शुगर. ये होता है कार्बन 1 अल्फा कार्बन. ठीक है, DNA is present in nucleus, endoplasmic reticulum, nucleus, mitochondria, chloroplast, nucleus, mitochondria, nucleus only. ये DNA सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेव कर देते हैं. OMG, तो नहीं गलत हो गया. ले लेते हैं. 3 bases constitute code word called codon. ठीक है, अच्छी बात है. ये ज़्यादा से ज़्यादा हम सिक्ल समाइन नजरों से गुजरेंगे तो अच्छी बात है. मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू विच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर. ये C5 हो सकता है. दोनों अब करेक्ट हो गए क्योंकि पेंटोज शुगर का मतलब है 5. ठीक है, 5 कार्बन शुगर. ठीक है, इसके बाद हम चल लेते हैं अगले टॉपिक की तरफ. अगला टॉपिक क्या है हमारा? केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA. ठीक है, इसके TS ले लेते हैं. Chromatin is composed of nucleic acid and proteins. Nucleic acid, none of these proteins, nucleic acid and proteins. ठीक है, देखते हैं. ये करेक्ट हो गया. चलिए चलते हैं आगे. तो वीडियो को देख लेते हैं. DNA is a polymer of deoxyribonucleotides, or you can say deoxyribonucleotides are the building blocks of a DNA molecule. What is a deoxyribonucleotide? Deoxyribonucleotide is composed of 3 components, and these are deoxyribose, nitrogenous base, and a phosphoric acid. So, first component, deoxyribose. Deoxyribose sugar is a pentose sugar derivative. It is derived from ribose sugar. Here you can say this is ribose sugar, and look at the numbering. Although this sugar is numbered conventionally, but only a prime designation is added. So this is 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime and 5 prime carbons. So if this is ribose, so if at 2 prime 1 oxygen is removed, this ribose sugar becomes deoxyribose. So at 2 prime position 1 oxygen is missing, so this is deoxyribose sugar. So this is one component of deoxyribonucleotide. The second component is the nitrogenous base. 4 different types of nitrogenous bases are present in a DNA molecule, and these 4 nitrogenous bases, they are derived from 2 parent compounds, and these 2 parent compounds are purines and pyrimidine. These 2 are parent compounds, and the rest, all the nitrogenous bases, 4 nitrogen bases, are derived from these 2 compounds. So these 2, adenine and guanine, these 2 are purines,
So look at the pictures. There are only minor differences. For example, difference lies here and here. So these adenine and guanine are derivatives of a parent compound, purine. Look at the numbering. Again, they are conventionally numbered, but here no prime designation is given to distinguish this from the numbered atoms in the pentose sugar. So next two are pyrimidines, and these are cytosine and thymine. Again, these two are slightly different from each other. For example, difference is here and here. So these two are derivatives of pyrimidines. The third component present in a deoxyribonucleotide is phosphoric acid. Phosphoric acid has 3 hydroxyl groups, so it can form 3 bonds with other molecules. So all these 3 components, that is a deoxyribose sugar, a nitrogenous base and a phosphoric acid, they combine together and they make a deoxyribonucleotide, which is the building block of the DNA molecule. So फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गया, तो हम चलते हैं अपने रीडिंग मटेरियल की तरफ। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे रीडिंग मटेरियल। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड इज एन ऑर्गेनिक chemical that give instructions and genetic information about the synthesis of protein. DNA is a polymer of deoxyribonucleotides. It is composed of 3 components: deoxyribose, nitrogenous bases, and phosphoric acid. And phosphoric acid. DNA has 3 parts such as a phosphate group, a sugar group, and 1 to 4 types of nitrogenous bases. ठीक है. DNA is also composed of chemical building blocks that are called nucleotides. In DNA strands, the nucleotides are linked to chain. Okay, there are 4 bases in DNA such as adenine, guanine, cytosine, thymine, and these bases form pairs: adenine with thymine and guanine with cytosine. ठीक है. इसके बाद में क्या होता है? The chemical DNA was first discovered in 1869, but its role in genetic inheritance was not demonstrated until 1943. In 1953, James Watson and Francis Crick determined that the structure of DNA is a double helix polymer, a spiral consisting of 2 DNA strands without round each other. अच्छा, wound around each other, sorry. ठीक है. उसके बाद फिर each strand is composed of a long chain of monomer nucleotides. The nucleotide of DNA consist of a deoxyribose sugar molecule which is attached phosphate group and 1 of 4 nitrogenous bases. ठीक है. 2 purines, adenine and guanine, and 2 pyrimidines, cytosine and thymine. The nucleotides are joined together by covalent bonds between the phosphate of one nucleotide and the sugar of the next, forming a phosphate sugar backbone. ठीक है. From which the nitrogenous base is protrude. ठीक है. One strand is held to another by hydrogen bonds between the bases. The sequencing of this bonding is specific, that is adenine bonds only with thymine and cytosine bonds only with guanine. ठीक है. इसके बाद में ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ सही हो गया. इसके बाद में हम चलते हैं अपने बोनस पॉइंट की तरफ. हमारा बोनस पॉइंट क्या है? आप लोगों को पता है हमारा बोनस पॉइंट है PPTs. ठीक है. इससे मुझे सबसे बेहतर समझ में आ जाता है. चलें जी, हमारा PPTs जो है ओपन हो गई हैं और हम इसको अब पढ़ेंगे. वेरी गुड. चलिए जी, अब चलते हैं हम. केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA इज अ पॉलीमर ऑफ deoxyribonucleotides. Deoxyribonucleotide is composed of 3 components: deoxyribose, nitrogen base, and phosphoric acid. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ गया केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA. deoxyribose अ पेंटोज शुगर डेरिवेटिव. ठीक है. इसके ये कंपोजिशन थी राइबोस की, और उसके बाद deoxyribose की ये कंपोजिशन हो गई. ठीक है. उसके बाद फिर आगे चलते नाइट्रोजनस बेसिस. ये होती हैं एक प्यूराइन
और का ग्रुप होता है, रिक्वायरमेंट का ग्रुप होता है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर उससे प्यूराइन में कौन कौन से इन्वॉल्व है, एडिनाइन एंड ग्वानिन, ठीक है। उसके बाद पाइरिमिडाइन में कौन से इन्वॉल्व है, साइटोसाइन एंड थायमाइन, सही हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास अगर फॉस्फोरिक एसिड, उसका ये स्ट्रक्चर है H3PO4, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमें समझ में आ गया है, आई होप आप लोग को भी आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब डिटेल्ड बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ में इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैं इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ PPT स्टडी नहीं करती हूँ, जितना मुझे समझना होता है मैं उतना स्टडी करती हूँ, ठीक है। आप लोग भी उतना स्टडी करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू विच कार्बन ऑफ डैश पेंटोस शुगर, ये C5 हो सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे। DNA is present in nucleus and mitochondria, ठीक हो गया। ओ ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, ये टिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर विच ऑफ टू आर कॉल्ड प्यूराइन्स, ग्वानिन एंड साइटोसाइन, एडिनाइन एंड ग्वानिन, या the type of coiling in DNA is double right-handed, opposite zigzag left-handed, ये है zigzag। देखते हैं टाइप ऑफ कोयलिंग का भी, टाइप ऑफ कोयलिंग गलत हो गया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, इसको ऑन कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये थर्ड टॉपिक नंबर 11 भी हो गया है कंप्लीट। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसको अगर हम आगे करें, टॉपिक नंबर 12 आ गया, ये देखा, ये मेरे ख्याल में आता जाएगा और आता जाएगा बस। ये नहीं हो रहा, ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ये हो जाएगा मेरे ख्याल में, ठीक है। ये आगे हो ही नहीं रहा, अच्छा ये आगे नहीं होगा जब तक कि हम ये टॉपिक नहीं करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक तो होगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।